Students, welcome you all. My name is Parul Gupta, your CS teacher. I welcome you all. So, as you all know, that students, that we are going to continue with our chapter 9, that is flow of control. So, in this session also, we're going to continue with our chapter 9 only, that is flow of control. Okay, like in this chapter, we're going to discuss about the conditional statement. So, now the topic that what I'm going to bring in today's session, that is iterative, or you can say the looping statement. Okay, that we're going to discuss in our today's session. Okay, so first of all, let's have a look the topics that what we are going to cover in our today's session. Yes, students, so these are the topics that what we are going to discuss. The first is our conditional loop, that is while loop. We are going to discuss, okay, what is while loop, what is the syntax of writing this while loop, how it evaluates this statement, that we are going to discuss with few sample programs of while. Okay, then we are going to discuss about the for loop in Python. Okay, the looping statement that we are going to discuss. But before start with the for loop, we first of all discuss with the range function, how we can specify the range in Python and how it works. Okay, that we are going to discuss. So these are the one of the major topic, okay, that we are going to discuss in our today's session. Clear? So now we shall start with the first, that is conditional loop, that is our while loop. Yes, the conditional while loop. What it is? A while loop repeatedly executes the statement as long as the given condition is true. Means in while loop, whatever the condition you're going to put over there, as long as that condition evaluates to true, that your statement will gonna execute it. ओके, मीन्स आप वाइल लूप में जो भी आप एक्सप्रेशन या कंडीशन दे रहे हो, अगर वो कंडीशन ट्रू हो रही है तो दैट लूप विल गोना एग्जीक्यूटेड. ओके, मतलब बॉडी ऑफ वाइल लूप विल गेट एग्जीक्यूटेड. बट इन केस द कंडीशन evaluates to false, then ultimately the control has been shifted to the next statement. That means the body of while loop will not get executed. तो अपने आप वो ऑटोमेटिकली वो कहाँ चला जाएगा इन वाइल लूप में? Yes, so as long as the condition evaluates to false, then your statement will not going to be executed. Okay, वो वहीं पे जैसे ही आपकी condition false हो जाएगी वो वहीं पे आपका stop हो जाएगा in case of while loop. Okay, and this is the syntax of writing the while loop. You have to mention while and then condition, whatever you want to put, like while a less than b or a less than. After this I'm going to give you discuss one example of this while loop so that it would be more clear. Okay, and then the statement, means this statement is the body of this while statement. Clear? So जैसे ही आपकी condition true होती जाएगी, so the statement will gonna execute it. As long as the statement evaluates to false, then it stops executing the statement. Clear? So this is particularly our while loop in Python. Now I'm going to show one example of this while loop so that it would be clear to you. Yes, so this is the example of while loop. As you can see here, that I equals to 1 I have taken. What is I? I is a variable I have taken, and the value stored in this variable I is 1. Okay, right now the value of I is 1. Okay, then after that I have used this while loop and I have put the condition I less than 8. Okay, if the value of I is less than 8, then print I. Okay, then I plus equals to 1. then उसके बाद जैसे अगर पहले 1 है तो 1 is less than 8. ठीक है, तो क्या प्रिंट कर देगा 1. उसके बाद नेक्स्ट लाइन में से क्या मिलेगा? I प्लस 1 हो जाएगा. मतलब पहले 1 था, फिर उसमें प्लस 1 जुड़ गया तो क्या बन गया? वो 2 बन गया. अब नेक्स्ट टाइम फिर यहाँ पे आएगा वाइल लूप में, फिर देखेगा कि क्या 2 इज़ लेस देन 8. येस, ऑफ कोर्स कंडीशन ट्रू. अगेन 2 प्रिंट कर देगा. फिर नेक्स्ट लाइन में I इंक्रीमेंट हो रहा है 1 से, तो फिर 2 में 1 प्लस हो जाएगा. देन माई I बिकम्स 3. देन 3 इज़ अगेन लेस देन 8. राइट, कंडीशन फिर ट्रू हो गई. देन इट प्रिंट I, दैट मीन्स क्या प्रिंट कर देगा? वो 3. फिर नेक्स्ट लाइन में इट्स गेटिंग एन स्टेटमेंट दैट इज I प्लस 1. अब फिर I को इंक्रीमेंट कर देगा 1 से, तो बिफोर I वॉज द वैल्यू ऑफ I वॉज 3, देन विद प्लस 1 नाउ I बिकम्स 4. देन अगेन फिर ऊपर जाएगा वाइल लूप के पास. ठीक है, मीन्स बार बार आपकी कंडीशन चेक होती जाएगी, और अगर आपकी कंडीशन ट्रू हो रही है तो वो एग्जीक्यूट करता जाएगा. अगर जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई, लाइक जैसे प्लस करते करते I की वैल्यू 8 हो जाएगी, तो फिर यहाँ जाएगा, फिर देखेगा कि क्या 8 इज़ लेस देन 8. नो, 8 इज़ नॉट लेस देन 8. 8 इज़ इक्वल टू 8. कंडीशन फेल्स. स्टॉप. This is the role of the while loop. I'm going to show you the output. Okay. Yes, so you can see here 1 प्रिंट हो गया, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, बट 8 प्रिंट नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मेरी कंडीशन वहाँ पे क्या हो गई?
false हो गई, because 8 is not less than 8, so condition false and it didn't execute anything. So this is the role of a, you can say, the while loop in Python. Clear? One more example I have taken here for the while loop. As you can see here that I have declared a variable that is n, and n stores the value that is 10. Okay, then I have put while condition and I have mentioned n is greater than 0. Means if the value of n is greater than 0, अगर n की वैल्यू 0 से बड़ी है, ठीक है, तो क्या प्रिंट हो जाए, n प्रिंट हो जाए. फिर नेक्स्ट लाइन में क्या हो, n माइनस इक्वल टू 3. फिर n में जो n की वैल्यू उसमें से 3 माइनस कर दीजिए, एंड देन अगेन द कंडीशन हैज़ टू बी चेक. मीन्स यहाँ पे अभी आप देखिए n की वैल्यू क्या है, द वैल्यू ऑफ n इज 10, सो 10 इज ग्रेटर देन 0. कंडीशन इवेलुएट्स टू ट्रू, तो क्या प्रिंट कर देगा, 10. फिर नेक्स्ट लाइन में इसको मिला कि n माइनस इक्वल टू 3. अब n की वैल्यू थी 10, 10 में से 3 माइनस कर देंगे तो n की वैल्यू क्या बन जाएगी, 7. फिर कंडीशन चेक होगी, क्या 7 इज ग्रेटर देन 0, येस, कंडीशन इवेलुएट्स टू ट्रू, प्रिंट कर देगा n दैट इज 7. ठीक है, फिर अब n की वैल्यू 7 है, फिर 7 में से 3 माइनस कर देगा तो नाउ n बिकम्स 4. So now again condition will be checked. So the 4 is greater than 0. Yes, of course 4 is greater than 0. Then print n, वो 4 print कर देगा. फिर 4 में से 3 माइनस हो जाएंगे तो then the value of n becomes 1. ठीक है, 4 में से 3 का 1. अब 1 इज ग्रेटर देन 0, बिल्कुल 1 इज ग्रेटर देन 0, प्रिंट कर देगा n, तो क्या प्रिंट कर देगा, 1. अब फिर 1 में से 3 माइनस किए जाएंगे तो -2 आएगा. अब जब वो दोबारा कंडीशन चेक करेगा तो -2 इज नॉट ग्रेटर देन 0, so my condition evaluates to false, so it stops executing. Okay, and one more thing I'm going to tell you, the anatomy, or you can say the loop, while loop control elements. जहाँ पे मैंने, as you can see on the top I have mentioned n equals to 10, so this is what, this is initializing the expression. मैंने क्या करा है, expression को initialize करा है. expression क्या है, मेरा n बड़ा होना चाहिए 0 से, ठीक है, और मैंने यहाँ पे n को इनिशियलाइज कर दिया कि मेरे अभी n की वैल्यू क्या है, 10. ठीक है, सो माय फर्स्ट स्टेटमेंट होल्ड्स द एक्सप्रेशन ऑफ 10, एक्सप्रेशन ऑफ, you can say called it as initializing expression. Then while n greater than 0, what is this, this is my test expression or condition. Okay, then जहाँ पे मैंने लिखा है print n and n minus equal to 3, what it is, this is the body of the while loop. Okay, and then I have mentioned n minus equal to 3, then this is what changing the, or you can say updating the expression, कि अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, n को अपडेट कर रही हूँ. ठीक है, ठीक है, जहाँ पे मैंने उस एक्सप्रेशन को इनिशियलाइज करा है, एज यू कैन सी हियर दैट ऑन द टॉप आई हैव डिक्लेयर्ड n इक्वल टू 10, सो आई हैव डिक्लेयर्ड, दिस इज इनिशियलाइजिंग द एक्सप्रेशन. ठीक है, यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाई बाय यूजिंग दिस व्हाइल लूप, व्हाइल n ग्रेटर देन 0, दिस इज माय टेस्ट एक्सप्रेशन. ठीक है, then print n, I have mentioned n minus equal to, these are the body of this while loop. then यहाँ पे जाके n minus equal to 3, मतलब मैं n को, जो एक्सप्रेशन मैंने ऑलरेडी ऊपर इनिशियलाइज करा है, उसको अपडेट कर रही हूँ, चेंज कर रही हूँ. सो दिस इज कॉल्ड एज अपडेटिंग द एक्सप्रेशन. क्लियर? You can have look. After this I'm going to show you, but first of all we can check the output of this particular code. Now I'm going to run this program. So you can see we are getting 10, then 10 minus 3 I'm getting 7, then 7 minus 3 I'm getting 4, and 4 minus 3 I'm getting 1. Next time if I'll from 1, if I'm minusing, if I use this minus 3, 1 minus 3 I'm getting the output that is -2, and -2 is not greater than 0, my condition false, so it stops. Okay, so this is all about the while loop. Yes, so this is basically the anatomy of while loop. मतलब while loop में हम क्या क्या चीज़ें मेंशन करते हैं या कैसा स्ट्रक्चर होता है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. द फर्स्ट इज इनिशियलाइजिंग एक्सप्रेशन, लाइक द प्रोग्राम दैट व्हाट आई हैव शोन यू जस्ट नाउ. इन दिस माय प्रोग्राम स्टार्ट्स विद n इक्वल्स टू 10, दैट इज इनिशियलाइजिंग एक्सप्रेशन, क्योंकि मैं यहाँ पे वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रही हूँ विद द वैल्यू दैट इज 10. ठीक है, सो यू कैन कॉल दिस एज अ इनिशियलाइजिंग एक्सप्रेशन, और यू कैन कॉल दिस एज अ स्टार्टिंग. ओके, then test expression में आप mention the condition that is while n is greater than 0, means my value of n should be greater than 0. तो यहाँ पे मेरी condition को टेस्ट किया जा रहा है कि whether my condition evaluates to true or whether it is evaluates to false. Okay, then the body of the loop, that is print n and n minus equal to 3, means after the condition whatever the statement you have mentioned, that is the body of the loop. So these two are the part of the loop. Okay,
then update expression, or you can say I'm changing. Then first the expression that what I have initialized, now I'm going to update. पहले मेरे n की वैल्यू इनिशियलाइज करी थी 10 से, अब मैं उसको चेंज कर रही हूँ कि नेक्स्ट टाइम मेरे n की वैल्यू क्या हो जाए कि जो 10 ऑलरेडी है उसमें -3 हो जाए, देन माई n becomes 7. Okay, so these are the 4 basic anatomy of a while loop. First it has our starting expression, then we have to test the expression, then the body of this while loop, and then updating expression. Clear? I hope now this while loop has been clear to you. One more example I have taken here for the while loop. As you can see here that I have declared a variable that is n, and n stores the value that is 10. Okay, then I have put while condition and I have mentioned n is greater than 0. Means if the value of n is greater than 0, अगर n की वैल्यू 0 से बड़ी है, ठीक है, तो क्या प्रिंट हो जाए, n प्रिंट हो जाए. फिर नेक्स्ट लाइन में क्या हो, n माइनस इक्वल टू 3, फिर n में जो n की वैल्यू उसमें से 3 माइनस कर दीजिए, एंड देन अगेन द कंडीशन हैज़ टू बी चेक. मीन्स यहाँ पे अभी आप देखिए n की वैल्यू क्या है, द वैल्यू ऑफ n इज 10, सो 10 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन इवेलुएट्स टू ट्रू, तो क्या प्रिंट कर देगा 10. फिर नेक्स्ट लाइन में इसको मिला कि n माइनस इक्वल टू 3. अब n की वैल्यू थी 10, 10 में से 3 माइनस कर देंगे तो n की वैल्यू क्या बन जाएगी 7. फिर कंडीशन चेक होगी, क्या 7 इज ग्रेटर देन 0, येस, कंडीशन इवेलुएट्स टू ट्रू, प्रिंट कर देगा n दैट इज 7. ठीक है, फिर अब n की वैल्यू 7 है, फिर 7 में से 3 माइनस कर देगा तो नाउ n बिकम्स 4. So now again condition will be checked. So the 4 is greater than 0. Yes, of course 4 is greater than 0. Then print n, वो 4 print कर देगा. फिर 4 में से 3 माइनस हो जाएंगे तो then the value of n becomes 1. ठीक है, 4 में से 3 का 1, अब 1 इज ग्रेटर देन 0, बिल्कुल 1 इज ग्रेटर देन 0, प्रिंट कर देगा n, तो क्या प्रिंट कर देगा 1. अब फिर 1 में से 3 माइनस किए जाएंगे तो -2 आएगा. अब जब वो दोबारा कंडीशन चेक करेगा तो -2 इज नॉट ग्रेटर देन 0, so my condition evaluates to false, so it stops executing. Okay, and one more thing I'm going to tell you, the anatomy, or you can say the loop while loop control elements. जहाँ पे मैंने as you can see on the top I have mentioned n equals to 10, so this is what, this is initializing the expression. मैंने क्या करा है, expression को initialize करा है. expression क्या है, मेरा n बड़ा होना चाहिए 0 से, ठीक है, और मैंने यहाँ पे n को इनिशियलाइज कर दिया कि मेरे अभी n की वैल्यू क्या है 10. ठीक है, सो माय फर्स्ट स्टेटमेंट होल्ड्स द एक्सप्रेशन ऑफ 10, एक्सप्रेशन ऑफ you can say called it as initializing expression. Then while n greater than 0, what is this, this is my test expression or condition. Okay, then यहाँ जहाँ पे मैंने लिखा है print n and n minus equal to 3, what it is, this is the body of the while loop. Okay, and then I have mentioned n minus equal to 3, then this is what changing the, or you can say updating the expression, कि अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, n को अपडेट कर रही हूँ. ठीक है, ठीक है, जहाँ पे मैंने उस एक्सप्रेशन को इनिशियलाइज करा है, एज यू कैन सी हियर दैट ऑन द टॉप आई हैव डिक्लेयर्ड n इक्वल टू 10, सो आई हैव डिक्लेयर्ड दिस इज इनिशियलाइजिंग द एक्सप्रेशन. ठीक है, यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाई बाय यूजिंग दिस व्हाइल लूप, व्हाइल n ग्रेटर देन 0, दिस इज माय टेस्ट एक्सप्रेशन. ठीक है, then print n, I have mentioned n minus equal to, these are the body of this while loop. then यहाँ पे जाके n minus equal to 3, मतलब मैं n को जो एक्सप्रेशन मैंने ऑलरेडी ऊपर इनिशियलाइज करा है उसको अपडेट कर रही हूँ, चेंज कर रही हूँ. सो दिस इज कॉल्ड एज अपडेटिंग द एक्सप्रेशन. क्लियर? You can have look. After this I'm going to show you, but first of all we can check the output of this particular code. Now I'm going to run this program. So you can see we are getting 10, then 10 minus 3 I'm getting 7, then 7 minus 3 I'm getting 4, and 4 minus 3 I'm getting 1. Next time if I'll from 1, if I'm minusing, if I use this minus 3, 1 minus 3 I'm getting the output that is -2, and -2 is not greater than 0, my condition false, so it stops. Okay, so this is all about the while loop. ये सो दिस इज़ बेसिकली द एनाटॉमी ऑफ वाइल लूप. मतलब वाइल लूप में हम क्या क्या चीज़ें मेंशन करते हैं या कैसा स्ट्रक्चर होता है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. द फर्स्ट इज इनिशियलाइजिंग एक्सप्रेशन, लाइक द प्रोग्राम दैट व्हाट आई हैव शोन यू जस्ट नाउ. इन दिस माय प्रोग्राम स्टार्ट्स विद n इक्वल्स टू 10, दैट इज इनिशियलाइजिंग एक्सप्रेशन, क्योंकि मैं यहाँ पे वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रही हूँ विद द वैल्यू दैट इज 10. ठीक है, सो यू कैन कॉल दिस एज अ इनिशियलाइजिंग एक्सप्रेशन, और यू कैन कॉल दिस एज अ स्टार्टिंग. ओके, then test expression में आप mention the condition that is while n is greater than 0, means my value of n should be greater than 0. तो यहाँ पे मेरी condition को टेस्ट किया जा रहा है कि whether my condition evaluates to true or whether it is evaluates to false.
Okay, then the body of the loop, that is print n and n minus equal to 3, means after the condition whatever the statement you have mentioned, that is the body of the loop. So these two are the part of the loop. Okay, then update expression, or you can say I'm changing. Then first the expression that what I have initialized, now I'm going to update. पहले मेरे n की वैल्यू इनिशियलाइज करी थी 10 से, अब मैं उसको चेंज कर रही हूँ कि नेक्स्ट टाइम मेरे n की वैल्यू क्या हो जाए कि जो 10 ऑलरेडी है उसमें -3 हो जाए, देन माई n becomes 7. Okay, so these are the 4 basic anatomy of a while loop. First it has our starting expression, then we have to test the expression, then the body of this while loop, and then updating expression. Clear? I hope now this while loop has been clear to you. We shall discuss with our next topic, that is operator in and not in. Okay, why I'm discussing this operator in and not in, as this operator in can be used with our range while we are using for loop. Okay, means जब हम for loop की बात करेंगे वहाँ पे हम ये operator use करेंगे, that is in and not in. Okay, so first of all we're going to understand what is operator in and not in. So let's start. In operator used with range in for loops. Okay, like as I told you before that this operator in has been used with our for loop. Okay, when we are going to discuss about the for loop, that time you can see how we can use this operator in and how we are using this range function. Okay, then the in operator test if a given value is contained in a sequence, it returns true, otherwise false. Okay, in operator क्या होगा, आपकी condition को check करेगा, whatever the value you have specified, if that value contained in that particular sequence or list, then it returns true, otherwise false. As you can see the example over there, for example 3 in 1 2 3 4. ठीक है, आपको दिख रहा है कि एक लिस्ट वहाँ पे डिफाइन की गई है 1 2 3 4 करके, क्या 3 उस पर्टिकुलर लिस्ट में है? सो वी कैन सी येस 3 इज अ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर सीक्वेंस, सो वी आर गेटिंग द आउटपुट दैट इज ट्रू. इन केस अगर 3 नहीं होता, देन इट रिटर्न्स द आउटपुट दैट इज false. Okay, now come to next, that is the not in operator. The not in operator tests a condition. If given value is not in a sequence, it returns true, otherwise false. Means अगर जो value, whatever the value you have specified, if that value is not contained in that sequence, then it returns true, otherwise false. Means not in operator just opposite of in operator. Okay, इन ऑपरेटर में क्या होता था कि अगर वैल्यू हमारी सीक्वेंस में एग्जिस्ट करती है तो वो ट्रू आउटपुट रिटर्न करता था, अगर वो वैल्यू हमारे सीक्वेंस में एग्जिस्ट नहीं करती है, देन इट रिटर्न्स फॉल्स इन केस ऑफ इन ऑपरेटर. बट इन केस ऑफ नॉट इन ऑपरेटर, इफ दैट वैल्यू इज नॉट कंटेन्ड इन दैट पर्टिकुलर सीक्वेंस, एज यू कैन सी द एग्जाम्पल आई हैव टेकन 5 not in 1 2 3 4, as you can see that in this particular is 5 is not there, so it returns true. Okay, but अगर 5 होता, then it returns false. Clear? So I hope this has been clear to you, this operator in and not in. Now I'm going to discuss few example of this operator in and not in. Okay, by using the string, list or tuples, how we can identify. Yes, for example you can see here I have mentioned a in a particular string that is trait. ठीक है, so now what I want कि whether this character, सब character a, कि क्या जो अल्फ़ाबेट a है क्या वो मेरी स्ट्रिंग ट्रेट में एग्जिस्ट करता है. सो यू कैन सी येस ए इज अ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्ट्रिंग दैट इज ट्रेट. सो 1 second. Yes, so why it's showing me the error? Because I have taken the variable a, so and it's showing a is not defined. Yes, so if I want to see whether my this character a is a part of this particular string, so I have mentioned this character in a string form only, and I want to know whether this alphabet a contained in my this particular string. So you can see yes, a is a part of the string, so it returns me the value that is true. Okay, similarly I can use more also, like if I'm entering ash hash in trash, okay, means ash is in this particular string trash or not, so it returns me true. Okay, so now I'm going to design one program, that is I've declared a variable that is line equals to input, then I'm giving enter a line. So it asks me for entering the line. Okay, let me enter. How are you all? Okay, so I've entered the line, that is how are you all. Then I'm entering string. I've taken one more variable, that is string equals to input,
enter a string. Okay, so now it asks me for entering a string. I'm entering how are you. Okay, then I'm using if string in line. अगर मेरी string किस में exist करती है, line में. Yes, so you can see here I've used this if function, that if string in line, print string is a part of line. Okay, and else if it does not, then print string is not contained in line. Okay, so now, okay, so now here comes the output, that is how are you is a part of how are you all, because my string I have defined as how are you and line I have defined as how are you all. Okay, so then I put condition कि if my string is in line तो print हो जाए string is a part of line, and if my string is not contained in this line then it print string is not contained in line. So as you can see, how are you is a part of that particular line, that is how you all. Okay, this is how we can use this in operator. Okay, now we're going to discuss our next, that is the for loop. Yes, so now I'm going to discuss my next last topic of today's session, that is the for loop in Python, right? So now we're going to discuss about the for loop. What is the use of this for loop, how we can specify, how we can iterate or process each item from the list, that we're going to discuss. Okay, so like the for loop of Python is designed to process the items of any sequence, or you can say the iterate to process the item or iterates each item from the sequence such as string or list one by one. मीन्स आपने जो भी सीक्वेंस या लिस्ट इसमें स्पेसिफाई की होगी, ठीक है. सपोज इफ आई मेंशन फॉर आई इन पर्टिकुलर लिस्ट. ओके, सो दैट मीन्स जितने भी उस लिस्ट में आइटम है, हर एक आइटम को वो अलग अलग प्रोसेस करेगी. दिस विल हैपन इन केस ऑफ फॉर लूप. Okay, the for loop of a Python is designed to process the items of any sequence such as, और वो sequence string भी हो सकती है, that sequence can be list also one by one. Okay, so the syntax for defining the for loop, as you can see, for variable, then we have to declare a variable in sequence. Here we have to specify the sequence. Okay, यहाँ वो list हो सकती है, वो string हो सकती है, whatever you want you can specify that, specify over there. ठीक है, then the colon and then statements to be repeated. Okay, then आप colon लगाओगे means this is my function header line, and then after the indented statement to be repeated. The statements to be repeated is the part of the body of the for loop. ठीक है, अगर वो उस पर्टिकुलर लिस्ट में है तो वो हर एक पर्टिकुलर लिस्ट, मतलब फॉर लूप में क्या होगा कि अगर मैंने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है लाइक फॉर ए इन 1 2 3 4, ठीक है, तो 1 हर बार वो प्रिंट करेगा 1 देन 2 देन 3 देन 4. ओके, मीन्स हर एक आइटम को उस पर्टिकुलर सीक्वेंस के प्रोसेस करेगा. दिस विल बी हैपन इन केस ऑफ फॉर loop in Python. Okay, I'm going to share one example with you so that it would be more clear to you how this will gonna work practically. Okay, yes, so you can see here the example I have mentioned for a in this particular sequence. Like a is what, it's a variable that what I have declared in 147, means पहले वो a की वैल्यू लेगा 1, then a4, then a7, then in next line the body of the for loop contain print a, तो उसने पहले print कर दिया 1, then next line print a into a, so 1 into 1 again it will gonna print 1. Okay, then next time it takes the value of a, that is 4, then it prints 4, then in next line I'm getting the statement that is print a into a, that is 4 into 4, I'm getting 16, then next time it takes the value of a, that is 7, and then it prints 7 into 7, that is 49. That means what happened in for loop, this variable a process each and every item of this particular sequence, you can see here. Okay, and this print a and print a star a is a part of the, or you can say the body of the for loop. This how means this for loop will gonna work in this Python idle shell. Okay, one more example I'm going to take. You can see here, that is number I've declared a variable that is number equals to 5. Okay, then I'm mentioning for a in range I have taken. Okay, now I'm taking the range means 1 comma 11. ओके, मीन्स मेरी रेंज में स्टार्ट वैल्यू है 1 और स्टॉप वैल्यू है 11. ओके, देन आई पुट कॉलन,
then I'm giving command that is print that is number, okay, comma, okay, this multiply, okay, then comma a, comma, then equals, then number into a, okay, means what I want कि if my a means अब ये here what I did I specify the range that is 1 to 11 means मेरी range start है 1 से stop हो जाएगी 11 पे. यहाँ पे step value नहीं given है तो automatically it has to be incremented by default with number 1. okay, then if a in for a in range 1 तो मेरा क्या print होना चाहिए, number print होना चाहिए that is 5, then into फिर a की value पहले वो 1 लेगा फिर equal 5 into 1 that is 5. okay, like you can see I'm going to print the example. ठीक है, like this I am getting 5 into 1 then it prints 5, then 5 into 2 then it prints 10. Means here I specify the range and it takes from starting from 1 until 10 because 11 is the stop value, so I didn't take the stop value. okay, so this how this loop has been worked in this Python idle shell. So it is very easy. So whatever the topics I have discussed today just now with you, student, please practice all the programs. okay, and one more thing, as I have told you that in the in the month of August your PD exam will be there, and whatever the syllabus we have covered in the July month, you all know we have covered 3 chapters that has to be there in your this August exam. okay, so please start learning the things from today only. okay, so please practice whatever the programs we have discussed just now and practice all the programs in all the chapters that what we have discussed. okay.